Hello everyone, welcome back and welcome back to UPSC Current Affairs newspaper audio. 13th of July. Oh, sorry, 14th of July. And I'm sorry for the glitch. I assure you I will try to maintain the consistency this time. Okay. So adults to get third dose free at government centers for 75 days. ठीक है यार, कोविड का देखा जाएगा. Uber obtained Delhi rape victims' medical records illegally, led to legal action in US. Not so much so. Oppo gets DRI notice for customs duty evasion. स्ट्रीट बैटल्स इन कोलंबो. इसके पीछे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. मोटी मोटी बात, अगर आप लोग अखबार फॉलो कर रहे हैं, टीवी डिबेट्स फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होगी कि पहले वहाँ पर बेसिकली पॉलिटिकल क्राइसिस था, उससे इकोनॉमिक क्राइसिस बन गया. अब इकोनॉमिक क्राइसिस इतना गंदा आ गया है कि साला वो पॉलिटिकल क्राइसिस और भी ज़्यादा एग्रीवेट हो गया है. और ये है कि ऐसा रूठा हुआ फूफा जी बन के बैठा है, कह रहा है कि मैं तो उतरूँ ही ना सीट से. ऐसे नहीं होना चाहिए यार. तो भाई हमारी ही तरह इनको भी मिली तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी ही थी, बट खाली एक स्ट्रक्चर इन प्लेस डज नॉट इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग. दिस हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड. हमेशा हम भी कर रहे हैं, बांग्लादेश हैज़ ऑल्सो डन, और पाकिस्तान भी तो कैसे कर रहा है ये तो, जबकि सिस्टम हमारे प्रिटी मच सेम ही है सबके. म्यांमार है, साथ ही में आज़ाद हुए हम लोग ऑलमोस्ट सबके सब, और साथ ही में एक ही प्रकार का कॉमन लॉ ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमने एक्वायर किया है. बट दिस इज़ लाइक, होप यू अंडरस्टैंड. फंक्शनिंग के लिए लोगों की स्पिरिट अच्छी होनी चाहिए. सिस्टम कोई सा भी हो, अच्छा भी चल सकता है, बुरा भी चल सकता है. सारे सिस्टम एक ही होते हैं, कुछ नहीं होता. ये अलग से डेमोक्रेसी, सोशलिज्म और ये अथॉरिटेरियन सब एक ही होते हैं. ये वनीला, मैंगो. NTA chief on CUET normalization will ensure level field. Okay. The Common University Entrance Test for Undergraduate Courses CUET UG starting July 15 has been designed to ensure that students taking the test earlier than their peers in the staggered format will not be placed at any disadvantage, as the scores will be based on a normalization process. National Testing Agency Director Vineet Joshi told the Indian Express. ठीक है. The normalization process, which is used by the agency in the case of engineering entrance tests, ensures equity as it takes into consideration various factors that could lead to one set of students performing better for reasons other than academic competence. भाई ये क्या है कि बेसिकली यूनिवर्सिटी, किसी भी तरह की अब यूनिवर्सिटी के अंदर स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं टेस्ट को टू गेट एन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन दिस कंट्री. आपको ये क्यूट सा टेस्ट देना पड़ेगा. और इसके बारे में ऐसे कह रहे हैं कि भाई ये आगे पीछे दे रहा है, उसको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि किसी को हमारे ऊपर एडवांटेज मिलेगा. ये सो कॉल्ड अपना स्टैंडर्डाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस टिका देंगे उसके अंदर, जो कि हर बार बोलते हैं, पर पता नहीं क्या क्रेडिबिलिटी उस बात की. फॉर इंस्टेंस द डिफ़िकल्टी लेवल, फॉर दैट मैटर यूपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में भी ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है दैट इट इज़ ईजियर टू क्रैक फॉर अ सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल. इंजीनियर्स के लिए आसान है, या फिर आर्ट्स वालों के लिए मुश्किल है, या फिर हिंदी वालों के लिए मुश्किल है, इंग्लिश वालों के लिए मुश्किल है. पता नहीं भाई, हम तो जिस दिन क्लियर करेंगे उस दिन बात करेंगे. For instance, the difficulty level of a question paper on the same subject may vary from one session to another, but normalization process offers a level playing field, Joshi said. Consider a situation where 20,000 students are taking the economics paper on July 15, while another group is taking the paper on August 8. ठीक है. One would assume that those taking in earlier are at a disadvantage, as the August 8 group will be better prepared. But while awarding the percentile scores, the relative performance of candidates, हाँ, जब भी उसको कम नंबर दे देंगे, तुमने तो पहले से पता था, from the same group will be considered, जोशी से.
The CUET-UG, which is the country's largest common entrance for college admissions, is scheduled to take place on July 15, 16, 19, and 20 in the first phase, and on August 4, 5, 6, 7, 8, 10, and 20 on the second phase. Over 14.9 lakh aspirants have registered for the test. The registered candidates have picked 54,555 unique combinations of subjects. Their CUET-UG scores will be used by colleges under 90 universities, including 44 central, 19 private, 11 deemed, and 12 state institutions. According to Joshi, the test has been structured in a way that it does not favor or disfavor anyone. On the question of several papers scheduled on a single day, which has left students who have chosen multiple subjects with very less transition time, Yoshi said the normalization process will take care of that as well. Moreover, when the exam was announced, we had made all the announcements. Choosing subjects in a particular slot is a choice that the students have exercised. We have not made any changes there, he said. Joshi said the NTA has ensured that candidates appearing in multiple papers on the same day get the same center. There are no cases of students who are appearing in more than one subject having to travel to different cities or centers in the same city on the same day anymore. There could be cases of a student being allotted different centers in the same city when the papers are spread over multiple days. As many as 98% have got the city of their first choice, and we are trying to accommodate the rest. We are trying to address genuine concerns, and we will continue doing that till tomorrow, he said. On complaints of delay in the issue of admit cards, Joshi said everyone was aware of the starting date of the exam. The dates were announced in June itself. It was a given that some students would have to appear in the initial few dates, while some would be assigned slots in phase 2. को इतना डिफेंड क्यों करना पड़ रहा है ये? कुछ अच्छी ही कोशिश कर रहे हैं मेरे ख्याल में शायद. टाइम तो लगता है हर अच्छी चीज़ को इम्प्लीमेंट होने में. रिकॉर्ड अच्छा नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा शक होता है. According to Joshi, the NTA has also received requests from students to prepare date sheets in a way that they get over with the entrance test as quickly as possible. We have tried to create an impartial and fair system based on all inputs, and based on our experience and learnings, we will bring improvements. For now, all genuine problems are being addressed, he said. ठीक है ना, करने दो ना, कोई अच्छी चीज़ नई चीज़ हो रही है. एजुकेशन के बारे में सरकार कुछ तो सोच रही है. By the way, I just listened to another debate on Sunset TV yesterday evening about इसी तरह से कुछ न्यू रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम. आप एक बार ज़रूर जा कर के कोशिश हो तो देखिएगा. अच्छी बातें करिए उसके अंदर, काफ़ी इम्पॉर्टेंट. जैसे कि एक चीज़ जो पता चली मुझे, स्टार्क डिफरेंस बोला, जो फंडिंग है हमारे देश में एजुकेशन के ऊपर, हायर एजुकेशन के ऊपर, तो बोला हार्डली 20% हैं जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, और 80% ऑफ द फंडिंग, स्टेट फंडिंग, गोज़ इनटू देम. जबकि जो ज़्यादा लोगों को सर्व कर रहे हैं, विच इज़ 80% ऑफ द लॉट, मतलब द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, उनको हार्डली 20% ऑफ फंडिंग मिल रही है, विच इज़ मतलब अच्छा नहीं है. दिस इज़ एम्बिगुअस. और but then there was someone defending that, saying कि first of all this 20% of the government institutions are सबसे पहले they are giving it to the most, it in the most uniform manner. वो गांव के आदमी को भी और शहर के आदमी को भी, मतलब पुअर को भी, मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्स लोगों को वो सर्विस कर रहे हैं. जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में तो बहुत ही मतलब लिमिटेड तबका है जो gets access to it, and other things like that. Do go through that debate. It was interesting and intriguing. Okay. यार ये CUET के ही बारे में 2-3 चीज़ें आई हैं. Let us go and see it and finish it. All you need to know: the Central University Entrance Test, CUET UG, which is mandatory for undergraduate admission to central universities across the country, is set to be held this month. The Indian Express answers some of the frequently asked questions about the computer-based test. My God, new thing, it's a computer-based test.
When is CUET scheduled to be? On so many dates. How will I know the date on which I am supposed to appear for QTUG? City intimation slip दी जाएगी सर आपको, which they can access on qt.summer.ac.in with their registered credentials, which provides the name of the city to take the exam along with the date sheet. Will the admit card be mailed? यार ये सब उन लोगों के लिए जो दे रहे हैं, हमारे लिए नहीं है ये. ठीक है. With QT starting tomorrow, student anxieties begin to mount. हाँ बताओ इनकी क्या टेंशन है. With the QT set to begin Friday, many from the first set of candidates for this mega test are anxious about schedules, centers, and preparations. After the expansion of the scope of the QT this year, it has become the gateway exam for undergraduate programs in some of the most sought after institutes, including Delhi University, which has been admitting students based on class 12th examination marks so far. Admit cards for the first phase of the exams were issued Tuesday, and many students were far from happy about their schedules. Excuse me. With the exam being conducted in two phases, multiple students who were allotted dates in the first phase said they felt they were being put at a disadvantage. हाँ ठीक है. I'm giving my QT exam on July 15 and 16 while I have friends who are going to give it on August 19. Now is it fair? There's a huge difference between writing the exam in 3 days and writing it in 40 days. I barely have time to cover the whole syllabus. वो कभी नहीं होगा तेरे पास में. And write an unfamiliar exam while they'll have. अबे unfamiliar क्या यार, syllabus दिया होगा ना, ऐसे थोड़ी unfamiliar. ये नहीं पता नहीं ये आजकल ये बच्चों में या यूथ में ये कंप्लेनिंग वाली एक अजीब सी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा दिखाई दे. ये नहीं हो रहा, डोंट वांट टू पुट एन एफर्ट टू एनीथिंग. क्या है ये? अब unfamiliar exam while they'll have ample time to understand the test format and the kind of questions asked. अरे फॉर्मेट कुछ नहीं होता यार, आप सिलेबस पढ़ के जाओ पूरा. मैं सच बता रहा हूँ, मैं 2 बार से यूपीएससी नहीं हो रहा. मैं गलती मेरी मानता हूँ. कुछ नहीं होता है पैटर्न वैटर्न, कुछ नहीं होता है कहाँ से आ रहे सवाल. आपने पूरा ढंग से पढ़ा होता तो आपका होता. He's trying to get into BMS or BCom honors program at DU. The level of competition is so high. I feel such a difference means my opportunity to get into a dream college has been already snatched away from me. तुम जाओ यार, तुमसे बात ही करना बेकार है. अग्निवीर साले, अग्निवीर बन जा यार तू जाके. जयशंकर वर्सेस विजयन. ठीक है, ओके. देयर वर अदर थिंग्स टू लुक एट. Avoid keeping dangerous beads as pets. Civic body. Interesting. A day after an 82-year-old woman was mauled to death by her family's pet American pit bull terror dog, Lucknow Municipal Corporation on Wednesday appealed to local residents to avoid keeping dangerous breeds of dogs as pets. डेंजरस ब्रीड के खाली गूंस रख सकते हैं, पेट्स रखना अलाउड नहीं है. अब यार ये स्ट्रेंस टेंसेस हैं. वैसे तो ये प्रॉपर डिबेट है बिटवीन becoming a pet owner and the others who are not so much into it and they don't like it. Then I think court का ruling है, as far as I remember, you go do your own research, that nobody can stop you. It was actually about these ये जो gated communities होती है ना, इसके अंदर ये ज़्यादा बड़ी डिबेट होती है. तो कोर्ट सेज कि आपको nobody can stop you from having a pet, but you should at the same time take care that it should not be a trouble to others, which is actually a legitimate thing to do. उसका पॉटी वॉटी कर रहा है तो उसका उठाने का आप सामान साथ में रखें, भौंका भौंकी कम करें. रात को कोई सोता है तो आसपास लोगों को डिस्टर्ब ना हो और इस तरह से. In a statement, Lucknow Municipal Commissioner Indrajit Singh appealed to residents to instead bring home small and friendly dog breeds, chota, while avoiding dangerous ones. Avoid keeping American Pit Bull, Rottweiler, Siberian Husky, Doberman, Pinscher and Boxer breeds. लोग लेते ही इसीलिए डॉगों से कोई प्यार थोड़ी होता है लोगों को, स्टाइल स्टेटमेंट होता है उनका. देखो मेरे पास तो इतना महंगा कुत्ता है, हस्की. अब वो साला यार वो वहाँ की ब्रीड है, ठंडे मौसम की,
उसको यहाँ लाके आप ट्रॉपिकल कंट्री के अंदर बेचारे के बाल झड़ते रहते हैं, खाना पीना पता नहीं क्या कुत्ते का उसका गधीचड़ बना देते हो। खाली अपने से मतलब है, दिखाएं देखो मैं पात तो हंस की है। ये बेचारे घूमते रहते हैं इतने एफिशिएंट, जो सड़क पे हमारे यहाँ देसी कुत्ते राजापाल है हम और ये सब। अरे इनका ध्यान रखो ना कोई भाई। People keeping dogs as pets should pay special attention to the canine's behavior. If their behavior changes, they should consult a nearby veterinary hospital. एक ये बहुत बड़ी बात, कुत्ते पालने का शौक तो बहुत लोगों को है हमारे यहाँ, लेकिन वेटनरी के पास ले जाने का, उसको खिलाने का, उसको ध्यान रखने का, वो खर्चा करने का ना उनका वो नहीं है। कुछ तो भाई लाते हैं लोग, कहते हैं अच्छी खासी ब्रीड है, उसको कहते हैं कि हम तो साहब इसको दही चावल खिलाते हैं और रोटी। अबे वो मांस पे जीता है यार, वो तुम्हारी तरह हिंदू मुसलमान थोड़ी ही है। They should be careful. Arrangements should be made for their food and stay according to their nature, he said. The statement added that pet owners with bigger dogs should not bother them while they are eating their meals, and that meat should be avoided in their meals. La. On Tuesday, Sushila Tripathi, a retired teacher, was mauled to death by RIP, an American pit bull terrier owned by her family in Lucknow's Kaisarbagh area. The woman succumbed to injuries while she was being taken to hospital. A police officer said the woman was at her residence with her domestic help when the dog attacked her on Tuesday. She suffered several injuries after the dog attacked her while she was eating. She struggled to get the dog off her and the domestic help tried to intervene but not to avail, said the official. तो गलत हुआ यार, बुरा हुआ, ये नहीं होना चाहिए। रेल लाइन लिंकिंग प्रोजेक्ट वगैरह देखो, बाद में बात करेंगे। कुछ और इम्पोर्टेंट छूट रहा? नथिंग। आगे चलिए, एक आधे एडिटोरियल्स हैं। ओके, पहले छोटा वाला एडिटोरियल देख लेते हैं, बाकी अगले पार्ट में। छोटू छोटू क्यूट। अप्रूवल फॉर homegrown cervical cancer vaccine could be a game changer. It must be part of immunization program. On Tuesday, India took a significant step forward in checking cervical cancer, which kills more than 60,000 women in the country every year. My God, मर्दों का तो फेवरेट है ये। The Drugs Controller General of India granted market authorization to the Pune-based Serum Institute. ये छाप लेगा भाई, ये बनेगा बिलियनियर, देखना अगला। Institute to manufacture the country's first indigenously developed vaccine, Sarvavac, against the human papillomavirus (HPV). HPV is responsible for more than 95% of cervical cancer cases. The vaccine, which has been almost 4 years in the making, reported encouraging results in the clinical trials. Great. An antibody response that's 1,000 times more than the baseline required against all HPV types. If things go according to SIS schedules, Sarvavac should be ready for mass manufacturing by the end of the year. The government shouldn't lose time in including the vaccine in the country's universal immunization program. अपने लिए ध्यान रखने की क्या बात है? सर्वाइकल कैंसर भी वायरस से होता है, नॉट डायरेक्टली, बट ये पैपिलोमा वायरस कॉजेज 95%, सो मीन्स हो ही क्या ऑलमोस्ट, अगर आ जाए तो आ गया। सर्वावैक क्या है? कोई कोविड वैक्सीन नहीं है, नहीं, ये सर्वाइकल कैंसर के लिए। थोड़ी सी पढ़ाई जा करके मेंस देने वाले लोग बाग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के ऊपर भी कर ले, ठीक है, क्या चेंजेस आए हैं ओवर द ईयर्स, उसकी क्या अचीवमेंट्स रही हैं। HPV is a common pathogen, but only a small proportion of its strains cause cancer. The disease is largely preventable, and a combination of early screening techniques and vaccination has reduced its virulence considerably in most developed countries in the past 15 years. India has remained an outlier to these developments. The Ministry of Health and Family Welfare, हमारे यहाँ पुलिस हमेशा लेट आती है, Welfare's data show that there are more than 4 lakh cervical cancer patients in the country at any given time. It's the second most common cancer amongst Indian women. The Health Ministry's guidelines, first breast cancer, most probably yes. The Health Ministry's guidelines recommend cervical cancer screening every 5 years for women above 30 at primary health centers and sub-health centers. But several studies have shown that the public health system in large parts of the country is ill-equipped to perform such gynecological procedures.
despite their relatively low cost. In 2018, the National Technical Advisory Group on Immunization recommended the inclusion of cervical cancer vaccines in the country's universal immunization program. But the high costs of vaccine, then manufactured by the pharma multinationals Merck and GlaxoSmithKline, proved to be a deterrent. The regimen costs upwards of rupees 4,000. My God, तो में तो राशन आ जाता है महीने का. The drug regulator's approval of the homegrown vaccine could prove to be a game changer in the battle against cervical cancer. According to the WHO, a vast majority of cervical cancer deaths happen in middle and low income countries. The global health agencies plan to vaccinate 90% of women below the age of 15 by 2030 hasn't made much headway, largely because of global big pharma's monopoly on the vaccines. The SII's website notes that Sarvavac will be available to developing countries in the near future. Developments in the Pune-based manufacturer's laboratory will be keenly watched. Right, guys, we'll meet in the second part.